ਹੈਲੋ एवरीवन। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ +2 ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ। ਡਿਊਅਲ ਨੇਚਰ ਆਫ ਮੈਟਰ ਐਂਡ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨੇਚਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਨਕਲੂਜਨਸ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲਾਜ਼ ਆਫ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਣੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੇਵ ਥਿਊਰੀ ਔਰ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। Now, what is photoelectric effect? The phenomena of emission of electrons from mainly metal surfaces exposed to light energy, for example, X-rays, gamma rays, UV rays, visible light, and even infrared rays of suitable frequency is known as photoelectric effect. ਬੱਚੋ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸਿਸ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ ਉਸ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨਸ। ਦੈਨ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਇਗਰਾਮ ਮੈਟਲਸ ਦੈਨ ਅਦਰ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰ। ਐਂਡ ਥਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਲਾਈਟ ਫਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਲਕਲੀ ਮੈਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। The electrons emitted by this effect are called photoelectrons. The current constituted by photoelectrons is known as photoelectric current. जब भी कुछ suitable range of frequency वालियाँ rays जो है suitable metal surfaces ਤੇ fall ਕਰਦੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ metal surface ਚੋਂ electron ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਉਂਦੇ। Under certain conditions electrons are ejected from the metal surface by certain light. That effect is called photoelectric effect. Now let us study what is the experimental setup to study photoelectric effect. इस वीडियो में हम समझेंगे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा फेनोमेनन है जिसमें लाइट रेडिएशन किसी मेटल सरफेस पे फॉल करती है और उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिशन होता है। इस फेनोमेनन को जर्मन फिजिसिस्ट हेनरिच हर्ट्ज ने 1887 में डिस्कवर किया था। जब हेनरिच हर्ट्ज इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तब उन्होंने ये पाया कि जब भी अल्ट्रावायलेट लाइट को दो मेटल इलेक्ट्रोड्स पे फॉल करे और दोनों इलेक्ट्रोड्स पे वोल्टेज अप्लाई किया जाए तो दोनों इलेक्ट्रोड्स पे स्पार्किंग होती है। इस फेनोमेनन को आगे स्टडी करते हुए 1902 में जर्मन फिजिसिस्ट फिलिप लेनार्ड ने इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया। उन्होंने ये बताया कि जब मेटल सरफेस पे लाइट फॉल करती है तब मेटल सरफेस से चार्ज पार्टिकल्स लिबरेट होते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से पहले लाइट को वेव माना जाता था, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कवरी के बाद ये पाया गया कि लाइट में पार्टिकल नेचर भी होता है और इसी कारण क्लासिकल फिजिक्स इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी को डिस्कवर किया जिसमें उन्होंने बताया कि लाइट में वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों होता है और लाइट में जो पार्टिकल होते हैं उसे फोटोन कहते हैं। कॉर्पस्क्यूलर थ्योरी की मदद से एल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की एक्सपेरिमेंटल स्टडी की और इसे एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी मिला।
तो आइए इस फेनोमेनन को डिटेल में समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है। इस ट्यूब के एक एंड पे एक फोटोसेंसिटिव प्लेट है और दूसरे एंड पे एक मेटल प्लेट है। ग्लास ट्यूब के ऊपर एक ट्रांसपेरेंट विंडो लगाया गया है। ये ट्रांसपेरेंट विंडो लाइट को फिल्टर करके एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को पास करता है। मेटल प्लेट और फोटोसेंसिटिव प्लेट को एक वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया गया है, जिसमें मेटल प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल और फोटोसेंसिटिव प्लेट नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। इस वोल्टेज सोर्स से डिजायर्ड वोल्टेज आउटपुट लिया जा सकता है। अब हम एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स से लाइट रेडिएशन एमिट करेंगे। ये लाइट रेडिएशन ट्रांसपेरेंट विंडो से फिल्टर होने के बाद फोटोसेंसिटिव प्लेट पे फॉल करती है। जैसे ही रेडिएशन फोटोसेंसिटिव प्लेट पे फॉल करती है, वैसे ही प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होने लगते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल प्लेट की ओर एक्सेलरेट होते हैं और आउटर सर्किट में फ्लो करने लगते हैं, जिसके कारण सर्किट में करंट क्रिएट होता है और इस करंट को हम फोटोइलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इस करंट को माइक्रो एमीटर की मदद से मेजर किया जा सकता है। इस एक्सपेरिमेंटल स्टडी में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वेरिएशन कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और ये फैक्टर्स हैं इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, पोटेंशियल और वोल्टेज ऑन मेटल प्लेट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। आइए अब जानते हैं कि ये फैक्टर्स फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे अफेक्ट करते हैं। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट रेडिएशन इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब जितना ज्यादा रेडिएशन की इंटेंसिटी होगी, उतना ही फोटोइलेक्ट्रिक करंट जेनरेट होगा। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन मेटल प्लेट। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट पोटेंशियल यानी वोल्टेज के साथ लगातार इंक्रीज होता है, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू रीच करने के बाद फोटोइलेक्ट्रिक करंट में कोई इंक्रीज नहीं होता। इस मैक्सिमम करंट की वैल्यू को हम सैचुरेशन करंट कहते हैं। अब अगर हम वोल्टेज की डायरेक्शन को रिवर्स कर दे तो हम देखते हैं कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होने लगता है और अगर ये रिवर्स वोल्टेज लगातार बढ़ता जाए तो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे फोटोइलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाता है। इस नेगेटिव वोल्टेज की वैल्यू को हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। इस एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि जब सेम इंटेंसिटी की रेडिएशन को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के साथ फॉल किया जाए तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट और स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू डिफरेंट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ with the intensity of light, effect of potential and frequency of incident light। ਅਗਰ ਅਸੀਂ incident light ਦੀ frequency ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਫੈਕਟ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਂਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦਾ फोटोइलेक्ट्रिक करंट ते की इफेक्ट है। देन इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। लेट अस डिस्कस फर्स्ट the effect of intensity of incident light on photoelectric current। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਔਰ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ
ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, that graph is a straight line, directly varies graph. For a fixed frequency, the photoelectric current increases linearly with increase in intensity of incident light. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੈਥੋਡ ਤੋਂ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਆਫ ਲਾਈਟ ਇਸ ਫੋਟੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮੈਟਲ 'ਤੇ ਫਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੋ ਹੈ ਐਨੋਡ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ with increase in intensity of light, photoelectric current increases and varies directly. Intensity of light varies directly with photoelectric current. Then next is the effect of potential on photoelectric current. For a fixed frequency and intensity of incident light, the photoelectric current increases with increase in positive potential applied to the anode. When all the photoelectrons reach the plate A, current becomes maximum and is known as saturation current. As we can see in the graph, as potential is positive, when potential is positive, there are different intensities shown in the graph, different intensities of incident light. As potential increases, current becomes maximum, and that maximum current in the circuit is called saturation current. Now at zero potential, you can see that there is certain value of current at zero potential. This shows that even in the absence of accelerating potential, a few photoelectrons manage to reach the plate on their own due to their kinetic energy. You can also see that at zero potential, see in the graph, at zero potential there is certain amount of current, and when potential is decreased, the current decreases but does not become zero at zero potential. Now the negative potential. When negative potential is applied to plate A with respect to C, photoelectric current becomes zero at a particular value of negative potential, called stopping potential or cutoff potential. Intensity of incident light does not affect the stopping potential. As we can see in the graph, we have three different intensities of incident light. Incident lights, all the incident lights of different frequencies meet at a certain point, and that potential is called stopping potential. Now the effect of frequency of incident light on photoelectric current. For a fixed intensity of incident light, the photoelectric current does not depend on the frequency of incident light, because the photoelectric current simply depends on the number of photoelectrons emitted and in turn on the number of photons incident and not on energy of photons. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਅਗਰ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਫਿਕਸ ਹੈ ਤੇ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫੋਟੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਰੰਟ simply depends upon number of photoelectrons emitted.
in turn on the number of photons incident, not on energy of photons. Next, effect of frequency of incident radiation on stopping potential. For a fixed intensity of incident light, the photoelectric current increases and is saturated with increase in positive potential applied to the anode. However, the saturation current is same for different frequencies of the incident lights. When potential is decreased and taken below zero, photoelectric current decreases to zero but at different stopping potentials for different frequencies. Higher the frequencies, higher the stopping potential. In the graph, we can see that we have incident lights with two different frequencies, and two different frequencies have two different stopping potentials. Now, the threshold frequency. The graph between stopping potential and frequency does not pass through origin. It shows that there is a minimum value of frequency called threshold frequency, below which photoelectric emission is not possible. However, the intensity of incident light may be. It depends on the nature of the metal emitting photoelectrons. लाइट को इलेक्ट्रॉन्स को सरफेस में से बाहर इजेक्ट करने के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत पड़ती है और उस फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी. ये फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है नेचर ऑफ मेटल emitting photoelectrons. Now, all these are the factors that changes photoelectric current. On that all the factors we have laws of photoelectric emission. For a given substance, there is certain minimum value of frequency of incident light called threshold frequency, below which no photoelectric emission is possible. However, the intensity of incident light may be. इंटेंसिटी जितनी मर्जी हो, सबसे पहले जो मैटर करेगा दैट इज द फ्रीक्वेंसी. सर्टेन मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी of incident light, that is threshold frequency. Below that frequency no photoelectric emission is possible. Second, the number of photoelectrons emitted per second, that is photoelectric current, is directly proportional to intensity of incident light, provided the frequency is above the threshold frequency. अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है उससे ज़्यादा इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे और फोटोइलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करेंगे. सो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस फोटोइलेक्ट्रिक करंट. The maximum kinetic energy to photoelectrons is directly proportional to the frequency, provided the frequency is above threshold frequency. The maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of the intensity of incident light. जो kinetic energy है photoelectrons की, that depends on frequency and not on intensity of incident light, which is the law. The process of photoelectric emission is instantaneous. As soon as the photon of suitable frequency falls on the substance, it emits photoelectrons. The photoelectric emission is 1 to 1. For every photon of suitable frequency, 1 electron is emitted. So all these are the laws of photoelectric emission. First law is related to threshold frequency. Second law shows relation between intensity photoelectric current.
Third and fourth law you can combine, that is related to kinetic energy, as this kinetic energy depends on frequency and not on intensity of incident light. Then the process is instantaneous, means electric emission is 1 to 1. For every photon of suitable frequency, one electron is emitted. As soon as light fall on metal surface, electrons are ejected from the metal surface. Now we have tried to explain photoelectric effect and its laws on the basis of wave theory of light, and also with the help of Einstein's theory. Now, according to wave theory of light, greater is the intensity of light, greater would be the energy absorbed by each electron on the surface. So, the kinetic energy of photoelectrons is found to increase with intensity. No matter what frequency of radiation is, so there is no idea of threshold frequency. जब इंटेंसिटी लाइट की बढ़ा दी जाती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उनको काइनेटिक एनर्जी मिल जाती है. बट वेव थियोरी ने इस चीज़ का आइडिया नहीं दिया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है. Also, according to wave theory, the absorption of energy by electron take place continuously over the entire wavefront of radiation. It can take hours or more for a single electron to pick sufficient energy to overcome the work function and come out of metal. It is contrary to the statement that photoelectric emission is instantaneous. Hence, wave nature of radiation cannot explain fact that kinetic energy of photoelectron is independent of intensity of light and depends on its frequency. The wave nature is unable to explain the most basic features of photoelectric emission. In 1905, Albert Einstein proposed a new picture of electromagnetic radiation to explain photoelectric effect. Einstein explained that photoelectric emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation. Einstein proposed quantum theory of radiation to explain photoelectric effect. Now, this is the Einstein who has explained the laws of photoelectric using photoelectric equation. According to Einstein, light is made up of photons, and photons are the bundle of energy having energy E equal h nu and equal hc over lambda, where h is Planck constant and nu is frequency of incident radiations, c is speed of light, and lambda is the wavelength. Now the properties of photon. A photon travels at a speed of light. Its rest mass is 0. Kinetic energy of photon is m equal E over c square. Momentum of photon is P equal E over c equal h by lambda. Photons travel in straight line. Energy of a photon depends on frequency of photon. So, energy of photon does not change when photon travels from one medium to another. Now, all that are the properties of photon. What Einstein considered, that the light that is falling on a metal, that light is made up of photons having certain frequency h nu. This light of certain frequency h nu is falling on metal surface, and the metal surface absorbs that energy. When a photon of energy h nu falls on a metal surface, the energy of the photon is absorbed by the electron and is used in two ways. A part of energy is used to overcome the surface barrier, and
come out of the metal surface. This part of energy is called work function phi equal h nu naught. The remaining part of energy is used to give velocity v to the emitted photoelectron. This is equal to maximum kinetic energy of the photoelectrons, half mv square, where m is mass of photoelectron. According to law of conservation of energy, energy of photon is used in two ways. Phi is the work function plus half mv square. When this light of energy h nu falls on a metal surface or a photosensitive metal, that energy is used in two ways. Firstly, in the work function, in this work function, energy is required by the electron to come out of the surface, and remaining part of energy is given to electron in form of kinetic energy. So an h nu equal phi plus half mv square, and value of half mv square is h nu minus nu naught. Now, verification of laws of photoelectric emission based on photoelectric equation. If nu is less than nu naught, means incident light has frequency less than threshold frequency, then kinetic energy is negative. This is not possible. Therefore, for photoelectric emission to occur, the incident light must have frequency greater than threshold frequency. Since one photon emits one electron, so the number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to the intensity of incident light. It is clear that kinetic energy is directly proportional to frequency. This shows that kinetic energy of photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident light. The photoelectric emission is due to collision between photon and an electron such that there cannot be any significant time lag between the incidence of photon and emission of photoelectron, that is, process is instantaneous. It is found that the delay is only 10 raised to power minus 8 seconds. Now, let us compare wave theory of light, experimental observations, and Einstein's explanation of photoelectric effect. According to classical theory or wave theory, emission of photoelectron occur for all frequency of light. Energy of light is independent of frequency. But the experimental observation is emission of photoelectron occur only when frequency of light exceeds the certain frequency, which value is characteristics of material being illuminated. Now, according to Einstein theory, when light frequency is greater than threshold frequency, a higher rate of photons striking the metal surface results in a higher rate of photoelectrons emitted. If it is less than threshold frequency, no photoelectrons are emitted. Hence, emission of photoelectrons depend on light frequency. Now, the next observation, experimental observation, very low intensity, high frequency radiation could emit photoelectrons. The maximum kinetic energy of photoelectrons is independent of light intensity. Now, what wave theory explains about this observation. Higher the intensity, greater the energy imparted to the metal surface for emission of photoelectrons. When the intensity is low, the energy of the radiation is too small for emission of electrons. But what Einstein has explained, that the intensity of light is number of photons radiated per unit time on a unit surface area. Based on Einstein's photoelectric equation, the maximum kinetic energy of photoelectron depends only on light frequency and work function. If light intensity is doubled, the number of photoelectrons emitted also double, but the maximum kinetic energy remains
unchanged. Now, according to experimental observation, energy of light depends on frequency. But what classical theory says or wave theory says that energy of light depends only on amplitude or intensity and not on frequency. According to Einstein theory, which is E is equal h nu, energy of light depends on its frequency. Now, the conclusions. Wave theory of light cannot explain photoelectric effect, and Einstein's photo theory has explained this effect. Radiation or light has dual nature. In some situations it behaves like wave, and in some others it behaves like photon. Wave nature of light or radiation is explained by certain effects like interference, diffraction, reflection, and refraction. Photoelectric effect and Compton effect explains particle nature of light or radiation. Now we can understand laws with the help of this diagram. Like we have light. That light consists of photons, and each photon carries energy, and that energy is determined by its color, and each color has its own frequency. Light is made up of photons. Photons have energy, and light also has different colors. Different energies have different colors and they have different frequencies. When photon fall on a metal surface, some amount of energy is used to do work function, that is to remove electron from the metal surface. Then frequency determines that photoelectric emission occurs or not. If frequency is less than threshold frequency, if incident light has frequency less than threshold frequency, then no photoelectric emission is possible. And if light has frequency equal to threshold frequency, then only work function is done, that only electrons are ejected from the metal surface. And if the incident light has frequency greater than threshold frequency, then that photoelectrons are also ejected from the metal surface and also provides kinetic energy. Now, photoelectric emission occurs from a metal determines frequency, that is threshold frequency. Now, the Einstein's explanation is very much clear from this diagram. For photoelectric emission from a metal to occur, we need work function and also need threshold frequency for photoelectric to occur, photoelectric effect to occur. Next, let us know what you have learnt today. Is the photoelectric emission possible below the threshold frequency? What is the work function? Write its value. Can wave theory explains photoelectric effect? I hope you know all the answers. You have some time to think again. Now, I am giving you the answers of these questions. Is photoelectric emission possible below threshold frequency? No, photoelectric emission is not possible below threshold frequency. What is the work function? Write its value. The work function is the energy required by the electron to eject from metal surface, and its value is h nu naught. Can wave theory explains photoelectric effect? No, wave theory cannot explain laws of photoelectric
effect. So here are the answers.